young doctors. So we'll be starting with electrochemistry. Electrochemistry is that branch of chemistry where we study how to convert electrical energy to chemical energy or how to convert the chemical energy into electrical energy. Both in two kinds of cell. First one is galvanic, electrochemical or voltaic cell, and the second type of cell is electrolytic cell. Now what we actually do in electrochemical cell, we convert chemical energy which is produced by reactions to electrical energy, that means to produce current. For example, if ZnSO4 is getting broken down, so how it is used to produce electric current, that we will study in galvanic cell. So galvanic cell में जनरली देखा गया है कि जैसे अगर हम एक बीकर ले रहे हैं and in this beaker if we have a solution like copper sulfate and if we dip a rod of zinc in it, so what will happen is थोड़ी देर के बाद ये जो solution था which was blue in color because of copper sulfate, the blue color will fade because zinc deposit होने लगेगा. Why? Because zinc is more reactive than copper. ये हम reactivity series में भी later on discuss कि जो ऊपर वाले metals होते हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देते हैं. 10th क्लास में भी ये टॉपिक था. सो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो उसमें ऊपर मेटल्स होते हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देते हैं बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव. सो जिंक जो होता है ऊपर होता है देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. सो लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि दिस सोल्यूशन में जो है ये जिंक आ जाएगा एंड कॉपर जो है यहाँ पे कॉपर जो है नीचे डिपॉजिट हो जाएगा. कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और सोल्यूशन से निकल जाएगा. थोड़ी देर के बाद जो रिएक्शन है जो बीकर था वो हॉट हो गया. वाई? बिकॉज केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट. नाउ व्हाट वी डू इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वी कन्वर्ट दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So galvanic cell converts chemical energy into electrical energy, and chemical energy is produced through spontaneous reaction where delta G is negative. For example, as we have already discussed one example wherein beaker mein we have taken copper sulfate solution and then we have taken a rod which is more reactive than copper like zinc. For example, if we take another solution, silver nitrate, and then another reactive metal like copper, so copper will displace silver from its solution and after a while silver will be deposited here and this solution will get hot. So chemical energy is produced. We'll try to convert this chemical energy into electrical energy. For this purpose, we will separate. We will here be building two half cells. So now we'll convert this chemical energy produced into electrical energy. For that, we'll divide the electrochemical cell into two half cells. Why half cells? Because on one side, we'll see oxidation will take place and on the other side, reduction will take place. For example, जब zinc जो है वो copper को displace कर रहा था, in that case we have seen कि zinc is reacting with copper sulfate to give. Zinc was reacting with copper sulfate और जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था. ये था सॉलिड स्टेट में और ये है इन एक्वस सोल्यूशन. दिस वाज रिएक्टिंग टू गिव जिंक सल्फेट. कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था जिंक सल्फेट इन एक्वस सोल्यूशन एंड कॉपर जो था वो नीचे डिपॉजिट हो रहा था, कॉपर इन सॉलिड स्टेट. तो इस तरीके की रिएक्शन हो रही थी. दिस इज एक्चुअली द रिडॉक्स रिएक्शन. अब यहाँ पर इफ वी ब्रेक दिस रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस, व्हाट विल हैपन? Zn जो है वो यहाँ पे किस स्टेट में, यहाँ पे 0 में है बिकॉज एलिमेंटल स्टेट है, यहाँ पे +2 में. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जो जिंक है दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव. अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखें, दिस इज Cu2 पॉजिटिव, दिस इज Zn2 पॉजिटिव एंड दिस इज Cu. एलिमेंटल स्टेट में तो 0 होता है, यहाँ पे भी 0 है. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, 0 से +2 में जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस. +2 से 0 में जा रहा है यानी यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. सो इफ वी आर ब्रेकिंग दिस इनटू टू हाफ सेल रिएक्शंस, सो दिस विल बी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. Zn जहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में एंड यहाँ पे अगर हम चार्ज बैलेंस करें 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडेड. सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. This is oxidation half reaction. And what else is happening here? जो Cu2 पॉजिटिव था ये Cu में जा रहा है, Cu2 पॉजिटिव. अगर हम चार्ज बैलेंस करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके दिस इज फॉर्मिंग Cu एंड दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन. सो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है.
यानी केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही है एंड वील कन्वर्ट दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी यूज्ड इन रनिंग मोटर, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एट्सेट्रा. सो बेसिकली हमने दो सेल्स को कनेक्ट कर दिया. एक जगह पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी और एक जगह पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी. एंड कन्वेंशनली ऐसा माना जाता है, हम ऐसे लेते हैं सेल की रिप्रेजेंटेशन में भी, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है. यहाँ पर हमने ले लिया जिंक और यहाँ पर हमने ले लिया कॉपर, बिकॉज जिंक के साथ ऑक्सीडेशन हो रही है. और इसको अगर हमने कनेक्ट कर दिया आपस में ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना रहे, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि हमें करंट के बारे में पता चले, छोटा सा करंट भी डिटेक्ट हो जाए. तो होगा क्या, जो Zn है, Zn विल बी फॉर्मिंग Zn2 पॉजिटिव, यानी ये सोल्यूशन में जा रहा है. दिस इज इन सॉलिड एंड दिस इज इन एक्वस सोल्यूशन. तो ये निकल के सोल्यूशन में जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. दिस विल फॉर्म Zn2 पॉजिटिव. और ये सोल्यूशन हम किसका लेते हैं, उसी का सोल्यूशन जो मेटल लिया है, ZnSO4. और अगर ये कॉपर है तो कॉपर का ही सोल्यूशन लेंगे. दैट मीन्स दिस सोल्यूशन विल बी CuSO4. आई होप दिस इज विजिबल. सो Zn2 पॉजिटिव ये जो है ये सोल्यूशन में आएगा बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. ये Zn2 पॉजिटिव तो आ गया, बाकी क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन. तो ये तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ से निकल के राइट हाफ साल में जाएंगे. अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये सोल्यूशन वाले Cu2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके उसको कराएंगे यहाँ पे रिड्यूस एंड दिस विल फॉर्म कॉपर. तो यहाँ पे कॉपर का जो है रॉड जो है मोटी मोटी होती रहेगी और जिंक की जो रॉड है ये पतली पतली होती रहेगी. एंड यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी. यानी अल्टीमेटली किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सल्फेट आयंस की. तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे आयंस का. तो थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन चलेगा और थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन के मतलब मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बनाए रखने के लिए या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए वी यूज इन्वर्टेड यू ट्यूब हेयर एंड दैट इन्वर्टेड यू ट्यूब इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. ना व्हाट सॉल्ट ब्रिज डज, सॉल्ट ब्रिज में हम कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल KCl, KNO3, K2SO4. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने KCl या K2SO4 ले लिया. K2SO4 इफ वी आर टेकिंग inert electrolyte क्या होगा, which does not interfere in redox reaction, which does not either react with ZnSO4 or with CuSO4. but what it actually does, ये जो K2 है यहाँ पे Zn2 positive है, this requires negative ions. so what will happen here if we are only taking K2SO4 as inert electrolyte, SO4 negative will travel here. SO4 2 नेगेटिव जो इस वाली तरफ ट्रैवल करेगा जहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, और जो यहाँ पे पॉजिटिव वाले आयन्स हैं वो जहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं इस वाली तरफ ट्रैवल करेंगे. एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन. ये यहाँ पे जाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ZnSO4 विल बी फॉर्म्ड एंड SO4 यहाँ पे जाएगा रिएक्ट करेगा, K2SO4 विल बी फॉर्म्ड. तो यहाँ पे जो है ओवरऑल क्या हो रहा है कि ये आयंस की मूवमेंट को अलाउ कर रहा है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे थे बट आयंस जो थे वो ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे थे. तो उन आयंस की मूवमेंट को अलाउ करने के लिए वी हैव यूज्ड हियर सॉल्ट ब्रिज. एंड मोर ओवर इट इज मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड इट इज ऑल्सो अलाउइंग आयंस टू फ्लो फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अनदर सोल्यूशन. So it also preventing the liquid-liquid junction potential which has formed because of decomposition of positive ions here and decomposition of negative ions here. So liquid-liquid junction potential को ये prevent करता है और जो है सर्किट को कंप्लीट कर रहा है. ये सर्किट को कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है ये बना रहेगा बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज. एंड इन सॉल्ट ब्रिज वी जनरली यूज inert electrolyte and inert electrolyte that too in agar or gelatin solution to allow their movement. So this was all galvanic cell. So this is an example of galvanic cell which we have already discussed, and this kind of cell is actually Daniell cell, जिसमें जिंक जो हो वो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हम कॉपर लेते हैं कन्वेंशनली. सेल की रिप्रेजेंटेशन करते टाइम भी हम लेफ्ट में एनोड वाला पार्ट लिखते हैं. एनोड वाला कौन सा पार्ट है, जहाँ पे Zn is getting converted to Zn2 positive. That means oxidation half cell reaction is taking place here. This is oxidation half cell, whereas cathode वाला part copper wherein reduction is taking place. This is reduction half cell. This is where reduction is taking place. So zinc जो होगा यहाँ पे Daniell cell में, zinc जो है हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन. इसका ट्रिक है याद रखने की, लोन, एंड दिस इज एनोड
and it is negative terminal or negative half cell. ये जो दो half cells है, two portion of cells is known as half cell or redox couple. Now the part which is negative we call it as anode, and the part which is positive we call it as cathode. This is at right part, and here reduction is taking place. Cu2 positive is getting reduced to copper. यहाँ पे deposit हो रहा है copper, and this is cathode, and the charge on it is positive. So here it is negatively charged and here it is positively charged. Negatively charged से positive charge में electrons will flow, and conventionally current is the direction opposite to that of the flow of electron. So current will flow from cathode to anode and electrons will flow from anode to cathode. जब यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे हो रही रिडक्शन तो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है और सल्फेट आयंस बन रहे हैं. तो थोड़ी देर के बाद इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. एज ए रिजल्ट liquid junction is potential is formed. Now to prevent that formation of potential we'll use inverted U-tube which is salt bridge. Salt bridge में हम inert electrolyte लेंगे, for example potassium sulfate, and it will react with these ions so it will allow the ions to flow from one solution to other, so it is maintaining electrical neutrality of this cell. So this is the overall galvanic cell, and it is an example. We call this example as Daniell cell, जहाँ पे zinc और copper का ले रहे हैं. This is a Daniell cell. So electrode on which oxidation occurs is anode and it is negative pole. Why? Because जब oxidation हो रही है, here electrons will get accumulated. Because of electron, this is negatively charged, and electrons will flow from negatively charged electrode to positively charged electrode. In the outer external circuit, electrons will flow from anode to cathode, and in the inner circuit, flow of ions will flow through salt bridge. So inner circuit is completed by salt bridge and external circuit is completed by the flow of electrons, and the direction of current is opposite to that of electrons. That means from cathode to anode. So electrons flow from anode to cathode and direction of conventional current is from cathode to anode. Question arises, what is salt bridge? We have already discussed. It is inverted U-shaped tube जहाँ पे inert electrolyte, for example KCl, K2SO4, KNO3 is used. Now what is inert electrolyte? Which does not take part in redox reaction and also does not react with the electrolytes that are used in both of these half cells. And agar-agar और gelatin solution. So what it actually does it, यहाँ पे जैसे zinc 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी और यहाँ पे सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, सो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव आइंस की और यहाँ पे नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी. टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वी हैव टू यूज दिस सॉल्ट ब्रिज. सो के पॉजिटिव विल गो एंड रिएक्ट विद SO4 2 negative and SO4 2 negative will go and react with Zn2 positive. So overall electrical neutrality will be maintained and ions will flow from this to this. So what ions are flowing through salt bridge. So what actually is happening, electrical circuit is getting completed from by allowing ions to flow from one solution to another, and electrical neutrality is maintained, and liquid junction potential, positive ions की concentration was getting increased here, whereas negative ion concentration was getting increased here. But so liquid junction potential was being created. So salt bridge is used to prevent that liquid junction potential and to complete electrical circuit. Representation of electrochemical cell. So far we have discussed the Daniell cell. Daniell cell में half, in the left half cell, oxidation was taking place, that means it was anode, and in the right half cell, cathode, the reduction is taking place. So how to represent that? In Daniell cell, zinc will get converted into Zn2 positive, this being in solid and this being in aqueous solution, and let its concentration be C1. We'll write in bracket. This is salt bridge, and then copper 2 positive, its concentration is C2. This is getting converted to Cu.
So what is happening here? Oxidation. This is oxidation half cell. We also call this as anode. The electrode where oxidation takes place, it is at left side, and this is reduction, and the electrode at which reduction takes place is cathode, and it is in right side of the electrochemical cell. So this is the representation of electrochemical cell. Let us take another example other than the Daniell cell. For example, copper. Copper mein if we are taking silver ions, Ag positive ions, so this will be forming Cu2 positive and 2 moles of silver. Copper being more reactive will displace silver from its solution. So if we break this into two half reactions, so what is happening? Ag positive is gaining 2 electrons to form Ag, and gain of electron is reduction, so this will take place in cathode. Whereas if we look at Cu, this is in solid, this is forming what? Cu2 positive, and 2 electrons are getting loss here. So loss of electron, this is oxidation, and oxidation takes place at anode. This is oxidation, this is reduction. This is in solid state, and ions are in aqueous solution. Ions are always in aqueous solution. If we represent this, how will we represent this? We very well know anode is placed in left half. So copper is getting converted to Cu2 positive. This being in solid and this being in aqueous solution. Then salt bridge, and then Ag positive in aqueous solution is getting converted to Ag. This being in aqueous solution and this being in solid state. So this is anode, or this is what? Oxidation half cell, and this is cathode, or this is reduction half cell. So this is how we represent electrochemical cell. Topic is electrode potential. It is the tendency of an electrode to lose or gain electrons. For example, in case of anode, oxidation is taking place, तो यहाँ पे loss of electron होगा, and in cathode reduction is taking place, तो यहाँ पे gain of electrons होगा. अगर हम इसके लिए 2 half cells बनाएं, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के लिए ही, यहाँ पर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे, यहाँ पे सिल्वर का इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे सोल्यूशन भी सेम ही इलेक्ट्रोड का लेंगे. अगर यहाँ पे हमने कॉपर लिया है और यहाँ पे हमने लिया है सिल्वर, सो यहाँ पे सोल्यूशन लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे सोल्यूशन लेंगे कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस. और इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर लें, यहाँ पे वोल्टमीटर लगा लें, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लें, और यहाँ पे हम लगा लें सॉल्ट ब्रिज. सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर एनोड पे तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी कॉपर जो है ये डिसोसिएट करके सोल्यूशन में आता रहेगा. Cu विल बी फॉर्मिंग Cu2 पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन, एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन. सो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जो है ये सिल्वर के साथ Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके Ag विल बी फॉर्म. तो यहाँ पे Ag जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होता रहेगा. नाउ what is the tendency of this cathode, this anode to lose electrons, and what is the tendency of this cathode to gain electrons? That tendency is known as electrode potential. और टेंडेंसी जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट. इनमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ही ज़्यादा दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन और दिस विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. So electrode potential is the potential difference between electrode and electrolytes. That means if we are considering an electrode and यहाँ पे अगर ये हमने ले लिया anode, so anode पे क्या हो रहा है? Oxidation takes place. That means zinc is getting converted to Zn2 positive, and this Zn2 positive is going down into solution. So a potential difference is created between this electrode and its electrolyte, its ions in the solution. That potential difference is known as electrode potential. And how do we calculate electrode potential? We connect it with standard hydrogen electrode, and standard hydrogen electrode is reference electrode, और इसका electrode potential we take it as 0. जिसका electrode potential इससे मतलब इसके साथ कंपेयर कर लेंगे हम, and the electrode which will show oxidation, that will be anode, and the electrode which will show reduction with respect to standard hydrogen electrode, that will be cathode. So
tendency of an electrode to lose or gain electrons. What anode does? Anode lose electrons, and what cathode does? It gains electron. So its tendency to lose or gain electron is known as electrode potential. जितना ज़्यादा potential difference होगा उतना ही ज़्यादा it will lose or gain electrons. Now electrode potential can be oxidation potential or reduction potential. Oxidation potential, when oxidation is taking place, when we have connected it to standard hydrogen electrode, then electrode potential is oxidation potential. It is represented as E anode or E oxidation. And reduction potential, if reduction is taking place with respect to standard hydrogen electrode, it is represented as E cathode or E reduction. Now what if we calculate electrode potential at standard condition? For example, अगर हमें हाफ सेल दे दिया है और जैसे कि जिंक के लिए हाफ सेल दिया है और यहाँ पे सोल्यूशन है ZnSO4, और अगर इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, सो वील कनेक्ट दिस बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस होती है, यहाँ पे प्लैटिनम होगा, प्लैटिनम की फॉइल होगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आगे पंप करेंगे और यहाँ पे 1 मोलर HCl सोल्यूशन होता है. और इसका जो होता है, दिस इज टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड. वाई दिस इज टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड? बिकॉज हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं एज 0 और इसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं बाकी के सेल्स का. सो फॉर एग्जाम्पल, हियर हाफ सेल ऑफ जिंक इज टेकन. Now what happens at zinc? Zn gets converted to Zn2 positive. So here oxidation is taking place. This is anode. So यहाँ पे जो potential आएगा, that will be oxidation potential. That means Zn will get converted to Zn2 positive and 2 electrons will get released. So here electrode potential will be equal to, at this condition, this is standard condition. That means 1 molar concentration, 1 molar ZnSO4 is taken and temperature is 298 Kelvin, and in case of gas the pressure is also 1 atmospheric pressure. Then that electrode potential will be standard electrode potential. So by connecting it with standard hydrogen electrode, the standard potential of zinc half cell is measured as 0.76 volt. And this is what kind of potential? This is standard oxidation potential because zinc is getting oxidized here. एंड कन्वेंशनली हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, बट हियर इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. नाउ व्हाट टू डू? वील टेक द नेगेटिव ऑफ इट. नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. दैट मीन्स यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ जाएगा एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? -0.76 वोल्ट. और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना निकाला था? 0.76 वोल्ट. नाउ व्हाट इफ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. व्हेन Cu2 positive is gaining 2 electrons and it is getting converted to Cu. Now here electrode potential of this cell, when we connect it with standard hydrogen electrode, what we see here, reduction is taking place. So copper will be in the right place, यहाँ पे right में होगा और इसका electrode potential होता है 0 और उसके connection में इसका electrode potential comes out to be 0.34 volt. So 0.34 volt is what? यहाँ पे क्या हो रहा है? reduction. So this is standard reduction potential and standard electrode potential. So standard electrode potential or standard reduction potential of Cu2 positive to Cu is 0.34 volt, whereas standard oxidation potential is minus of 0.34 volt. So this is how we calculate standard electrode potential, standard reduction potential and standard oxidation potential. Cell potential or EMF, electromotive force of a cell. Now what is cell potential? Electrochemical cell जो है ये 2 electrodes, this is consist of 2 electrodes, 2 half cells we can say. One is this anode and one is cathode. Anode पे oxidation takes place, whereas at cathode reduction takes place. Now their respective electrode potential is known as oxidation potential and reduction potential. The one with greater electrode potential tends to lose electron. That means oxidation takes place at that. So what will happen? Anode से क्या होता है? यहाँ पे this will lose electron and electrons will go here और this will gain electron. तो जिसका electrode potential ज़्यादा होता है वहाँ से electrons flow करते हैं to that half cell जहाँ पे electrode potential कम होता है. So overall there is a difference between electrode potential of these 2 half cells and that difference we call it as cell potential or cell voltage. It is also known as EMF or electromotive force of the cell if no current is drawn from the cell at all the conditions. That means EMF is the potential difference between 2 electrodes in open circuit. This circuit is not closed. And EMF can be measured by potentiometric methods.
Cell potential is the difference between electrode potential, and what electrode potential we consider? We generally consider reduction potential of cathode. Cathode का तो वैसे भी reduction potential ही आता है, लेकिन एनोड के लिए जो potential दिया होता है that is oxidation potential, तो हम उसकी value minus ले लेते हैं. For example, oxidation potential is 0.7, so its reduction potential will be minus 0.7. और अगर cathode के लिए reduction potential दिया है कितना, let us consider it 0.34. तो ये वैल्यू तो प्लस में ही दी है, we'll take it like this. एंड अगर इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दैट वैल्यू विल बी नोन एज सेल पोटेंशियल. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल. इफ नो करंट इज ड्रॉन देन सेल पोटेंशियल इज द EMF ऑफ द सेल. एंड EMF को कैलकुलेट हम दो तरीके से करते हैं. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड EMF व्हेन ऑल द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड. दैट मीन्स टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, pressure is 1 atmospheric and concentration of all the product and reactant is 1 molar. Solution के सबके concentration is 1 molar. उस केस में जो cell potential और EMF निकलता है that is standard EMF of the cell and its value is equal to E naught of cathode minus E naught of anode, where E naught of cathode is reduction potential of cathode whereas E naught of anode is reduction potential of anode. So this is the value of standard EMF. And if ये भी होगा reduction potential and this will also be the reduction potential. What if we are writing it in the form of cathode के लिए भी very well नो reduction potential ही आता है. What if we are writing here oxidation potential, then this value will be plus. If we are writing here the oxidation potential of anode, so this will be the value. We very well know कि अगर हमें reduction potential दिया है तो उसकी value को minus करना पड़ेगा, then we'll get the value of oxidation potential. Electromotive force or EMF depends on three things: nature of reactants, concentration of solution and temperature. Now what if अगर हमने standard conditions ले लिए, यानी concentration of all solution if we have taken it as 1 molar and temperature we have taken it as 298 Kelvin and we have taken pressure to be 1 atmosphere, then EMF will be known as standard EMF. And the formula for standard EMF is, we'll write left पे कौन सा हाफ सेल होता है एनोड एंड राइट पे होता है कैथोड. सो एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, सो इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड. एंड राइट पे कौन सा होता है कैथोड, सो कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. नाउ what we do, we only consider reduction potential. So अगर हमने oxidation potential को reduction में convert करना है, we'll just put a negative sign over there. So standard EMF लिखते time we only consider reduction potential. So standard reduction potential of cathode and oxidation potential को अगर reduction potential में convert करना है, we have to use negative sign here. So standard EMF is equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. So E naught cell will be equal to E naught cathode minus E naught anode, where E naught anode is standard reduction potential of cathode and E naught anode is standard reduction potential of anode. So this is the value of standard EMF. In electrochemical cell we draw anode in left and cathode in right. So anode पे होती है, anode is in left and cathode is at right. So we can also write it as E naught cell is equal to E naught right minus E naught left. Or representation may be, we write cathode at the right hand side. For example, if we are writing for zinc, galvanic cell, Daniell cell, this is salt bridge, this is Cu2 positive and this is Cu. So यहाँ पे इधर क्या, what is taking place here? Oxidation. So this will be what? This will be anode. And what is taking place here? Reduction. And which half cell it is? It is cathode. So oxidation potential, reduction, standard reduction potential of right, that means of cathode, minus standard reduction potential of left, that means E naught anode. So this way we can also calculate standard EMF. Electrode potential is the potential of respective half cells, and the difference between two electrode potential of two half cells is known as EMF. Now how to calculate this difference? For example, if we are taking an example of Daniell cell. Daniell cell में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है जिंक का एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है कॉपर का. जिंक से Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है सोल्यूशन और यहाँ पे क्या होता है Cu2 पॉजिटिव जो है ये डिकम्पोज होके Cu बना रहा है. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 positive and 2 electrons are getting liberated. ये हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करके निकालते हैं, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से और वहां से हमें इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज कॉपर, Cu2 पॉजिटिव इज रिएक्टिंग विद 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cu. यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन. तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और हमें इसका भी क्या पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. नाउ इफ वी राइट ओवरऑल रिएक्शन इट विल बी Zn plus Cu2 positive gives Zn2 positive and copper is getting liberated here. Copper is getting deposited, sorry. So EMF of the cell की कितनी वैल्यू आएगी, EMF overall EMF of the cell will be equal to E naught cell, and E naught cell is how much, E naught cathode minus E naught anode, और E naught at right hand side. कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, कॉपर में क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज मेजर्ड टू बी 0.34 वोल्ट, whereas जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड टू बी 0.76 वोल्ट. ये वाला कौन सा पोटेंशियल है, दिस वन इज इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सो वी हैव टू राइट माइनस हेयर, तब ये स्टैंडर्ड आएगी वैल्यू, बिकॉज स्टैंडर्ड में वी ओनली कंसिडर रिडक्शन पोटेंशियल. सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैथोड के लिए कितना है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड के लिए कितना है, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट. डोंट गेट मिस्टेकन हेयर, माइनस एक फॉर्मूले का है और एक माइनस इसका अपना है. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1.10 वोल्ट और 1.1 वोल्ट. सो फॉर Daniell cell EMF is 1.1 volt. Button cell used in watches functions as following. So Zn is getting converted to Zn2 positive. That means यहाँ पे क्या हो रहा है इसके लिए, oxidation. So oxidation takes place where? Oxidation takes place at anode. और इसके लिए E naught anode, that means standard reduction potential of anode is given. This is the reaction. यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी दी है, माइनस 0.76 वोल्ट. बट रिएक्शन में क्या हो रही थी इसकी, ऑक्सीडेशन. सो E naught anode इज माइनस 0.76 वोल्ट. हम फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं. नेक्स्ट इज Ag2O. दिस इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2Ag. सो यहाँ पे तो रिडक्शन हो रही है, रिएक्शन में भी यही हो रहा था, रिएक्शन में भी रिडक्शन हो रही थी, और इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे. सो E naught कैथोड इज गिवन एज 0.34 वोल्ट. हम E naught की वैल्यू सिर्फ किस में लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में. एंड EMF ऑफ द सेल इज व्हाट, E naught ऑफ कैथोड माइनस E naught ऑफ एनोड. दैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. सो दिस वैल्यू इज माइनस 0.76, माइनस माइनस इज प्लस, दिस वैल्यू इज 1.10 volt, which is given in option C. Reduction potential of half reactions are given below. More positive the value of E naught of the cell or E naught reduction potential, more feasible the reaction would be. So यहाँ पे reduction potential की वैल्यू दी है, so reduction ज्यादा feasible किसके केस में होगा, F2 के केस में. So F2 will get reduced. If it is getting reduced, that means it is acting as oxidizing agent. And less tendency किसकी है to get reduced is of iodine. So it will not get reduced. Whereas I negative, its reverse will take place. That means I negative will get oxidized to I2. That means इसकी क्या होगी, oxidation. If it is getting oxidized, that means it is behaving like reducing agent. So I negative is reducing agent and F2 is oxidizing agent. Oxidizing agent is F2 and strongest reducing agent is I negative. Option electrode potential, we very well know standard electrode potential is the standard reduction potential. So 3 के लिए दिया है X, Y and Z. इसका reduction potential is -1.2 plus 0.5 and इसका -3.0. More positive the value, more feasible the reaction is. That means सबसे ज़्यादा reduce कौन सा होगा Y, उससे कम reduce कौन सा होगा X और उससे कम reduce कौन सा होगा Z. लेकिन here they have asked reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यानी इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ग्रेटर विल बी फॉर जेड फॉलोड बाय एक्स फॉलोड बाय वाई. सो सबसे पहले ऑक्सीडाइज कौन सा करेगा, जेड. दैट मीन्स इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. Standard electrode potential, we very well know standard electrode potential is equal to standard reduction potential. For 2 of the cells, half cells are given. This value is plus 0.15 volt. And for Cr3 positive to Cr, this value is minus 0.74 volt. Now जो value जितनी ज़्यादा होगी, this reaction will be more feasible. That means this will selectively get reduced and this chromium will get oxidized. So we very well know while writing E naught cell, E naught this will act as cathode, whereas this will act as anode. And we very well know while writing E naught cathode, we write standard reduction potential of cathode, and while writing E naught anode, we write standard reduction potential of anode. So overall EMF of the cell will be E naught cathode minus E naught anode. The reduction potential of cathode minus the reduction potential of anode.
minus 0.74. Not to confuse, minus sign is of formula and minus sign is for reduction potential of anode. So this value is 0.14 plus 0.74. So it comes out to be 0.89 volt, which is given in option B. E naught value for Fe3 positive standard electrode potential for this cell is given as plus 0.77 volt. Now what is happening here? Reduction. So this is reduction potential. Now E naught for I2, this is getting converted to 2I negative. So this is also reduction potential, and this value is plus 0.536 volt. More positive the value, more feasible the reaction is. That means more feasible will be of this. So this will undergo reduction. So this will undergo oxidation. Reduction undergo kara, that means this half cell is cathode, whereas this half cell is anode. So overall reaction would be Fe3 positive will get converted to Fe2 positive, whereas reverse of this reaction will take place. That means 2I negative will get converted to I2. So I negative, I2 will be reduced? No. There will be no redox reaction? No. I negative will get oxidized to I2? Yes. Option C is the correct option. Fe2 positive? No. So option C will be the right answer to this. For EMF of an electrochemical cell. Electrochemical cell consists of two half cell, anode and cathode. Anode पे oxidation takes place, whereas at cathode reduction takes place. And EMF of the cell is the difference between electrode potential, and electrode potential is actually reduction potential. So reduction potential of cathode minus reduction potential of anode is what EMF is. And we very well know कि reduction potential is the negative of oxidation potential. So if we have to write reduction potential of cathode, so if we have to write oxidation potential, we will write plus oxidation potential of anode. And what if we have to write this as oxidation potential? So this will be minus oxidation potential of cathode. And if we have to write this in oxidation potential, this will be oxidation potential of anode. And what if we have to write this as reduction potential? We have already written oxidation, oxidation, oxidation. What is left now? Reduction, 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 oxidation, oxidation, oxidation. Let us write oxidation and reduction. So this will be oxidation potential of cathode, and this is minus reduction potential of anode. So these are all the formulas for EMF of the cell. Let us look at the example. Oxidation potential of anode. Oxidation potential of anode, yes. Plus reduction potential, yes. So plus, it is given in option second. First option is incorrect as minus sign is given. Next is third. EMF is reduction potential of anode plus reduction potential of cathode. No, no such formula exists. So third is wrong. Next is fourth. Oxidation potential of anode. Oxidation potential of anode, yes. Minus oxidation potential of cathode, yes. So fourth formula is also correct. So the options are second and fourth, which is given in option D. Oxidizing agent itself get reduced, and in both of these reaction loss of electron is taking place. That means this is the reaction for oxidation, and reduction के लिए we have to reverse the reaction. That means this is FeCN whole 6 3 negative. It is gaining electron to form FeCN whole 6 4 negative. This is reduction, and E naught की value क्या हो जाएगी? If reaction is reversed, E naught की value becomes negative. So minus minus is plus 0.35 volt. Next इसको भी reverse कर देते. Fe3 positive plus electron. In that way it will get reduced. Fe2 positive and E naught की value कितनी हो जाएगी? Plus 0.77 volt. So more positive the value of E naught, more feasible the reaction is. तो ज़्यादा feasible कौन सी है? Second वाली reaction. That means more readily ये वाला reduce होगा. This will be better oxidizing agent. So option will be option first. Chemical cell is shown as this. A is giving A positive, salt bridge. B positive is forming B. So this is getting oxidized and this is getting reduced, and EMF of the cell is measured as plus 0.20. That means more positive the value, more feasible the reaction is. If it is positive, then the reaction is feasible. That means A is forming A positive and B positive is forming B. So this will be the overall redox reaction, which is given in option first. The reaction is given as this. Let's break this into two half reactions. Now it is getting oxidized and it is getting reduced. So these two reactions are taking place. This is what? Oxidation हो रही है तो ये कहाँ पर होगा? एनोड पे, और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है तो ये कहाँ पे होगा? कैथोड पे. और हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया है ना, दिस रिड्यूस हो रहा है. तो इसके लिए कितना दिया है? Fe2 पॉजिटिव के लिए दिस वैल्यू इज E नोड एनोड कितना दिया है? -0.441 वोल्ट.
और ई नॉट कैथोड कितना दिया है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, दिस वैल्यू इज 0.771 वोल्ट. वी वेरी वेल नो EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. माइनस माइनस 0.441 वोल्ट, माइनस माइनस is plus, this is 0.771 plus 0.441. If we plus this, so answer comes out to be plus 1.212 volt, which is given in option D. Electrode potential of Fe2 positive, this is forming Fe, and electrode potential of this is minus 0.44 volt, and electrode potential of Fe3 positive, this is giving Fe2 positive, and electrode potential is plus 0.77. So more positive the value, more feasible is the reaction. So which reaction will be feasible? Second reaction is more feasible. That means more Fe3 positive will be forming Fe2 positive, but first reaction is not feasible. So its reverse is feasible. Fe will be forming Fe2 positive. So what will happen if we keep both of these three together? The concentration of Fe2 positive increases. So Fe2 positive increases. Fe2 positive, Fe3 positive increases? No. Fe3 positive decreases? Yes. So B option is the correct option. Fe2 positive, Fe3 positive remain unchanged? No. Fe2 positive decreases? No. It is increasing. So option B will be the right answer to this. Potential for following half cells reactions. Zn is getting converted to Zn2 positive. ये कौन सा potential है? Oxidation potential. Fe is getting converted to Fe positive. ये भी कौन सा potential है? Oxidation potential. So EMF for the following reaction. Fe2 positive plus zinc. This is forming Zn2 plus Fe. So Fe2 positive क्या हो रहा है यहाँ पे? This is getting reduced. Whereas Zn का क्या हो रहा है? Oxidation. So बहुत simple तरीका है लिखने का. E naught cell we very well know what is happening. E naught cathode minus E naught anode. कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन, और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन. सो हम लिखेंगे कैथोड वाले के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, ये वाला कौन सा दिया? ऑक्सीडेशन. रिडक्शन लिखने के लिए हम इसको आगे माइनस कर देंगे. फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल यूज होता है ना, स्टैंडर्ड. सो कैथोड क्या, कहाँ कैथोड पे क्या हो रही है? रिडक्शन. इस वाले का लिखना है Fe2 पॉजिटिव टू Fe. Fe2 पॉजिटिव टू Fe, दिस इज व्हाट? माइनस 0.44. माइनस एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन. Zn किस में जा रहा है? Zn2 पॉजिटिव में. सो इसके लिए कितनी दी है? माइनस 0.76 volt. So this is minus 0.44, minus minus is plus 0.76. इसको solve कर लेते हैं. Answer is 0.32 volt, which is given in option D. Standard reduction potential of following are given. This is what? This is getting reduced. More positive the value, more feasible the reaction is. So more feasible the reaction is. So both all are getting reduced. सबसे ज़्यादा अच्छे से reduce कौन सा होगा? Where the value is more positive. So this will get reduced first, followed by this, followed by this, followed by this. And we have asked strongest oxidizing agent. Oxidizing agent itself get reduced. So itself is more potential for getting reduces for Mg2 positive. So Mg2 positive is the strongest oxidizing agent. So option will be option B. The electrode potential for this is given. This is getting reduced. This is getting reduced. This is getting reduced. This too is getting reduced. More positive the value, more feasible it is. That means अगर हम reduction के लिए लिखें, now what if someone is getting reduced, that will behave like oxidizing agent. So oxidizing agent का order में सबसे पहले कौन सा वाला आएगा? Ag positive, followed by उससे कम किसकी value है? This value, Cr3 positive, followed by this value, followed by this value, Al3 positive, and followed by this value, which is K positive. Now we have asked reducing agent. So reducing agent इसका opposite होगा. That means K will come first, Al will come second, Cr will come third, and Ag will come fourth. So correct option will be option second.